प्यार मांगा है तुम्ही से, मुझे प्यार करो, अजनबी जिद मानो मेरी, मुझे प्यार करो। जरीन अभी वहाँ कॉन्फिडेंट दिख रही है एकदम। आप ये कहाँ ले आए? मैं क्या हो रहा है? अच्छा उल्टा था। हाँ, like I was the one who was feeling whatever. अच्छा, और supposed to feel whatever. नहीं आया क्यों? आई थिंक वो थोड़ा हम लोग थोड़ा स्कैंडलाइज होके वहाँ से भाग जाते हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट यू सी व्हेन जरीन रन्स ऑफ। और फिर उसके बाद इट्स अ कपल, इट्स अ डे यू नो इन अ कपल्स लाइफ, अ न्यूली मैरिड कपल। और वो दिन दिखाते हैं, ऐसा कुछ अतरंगी नहीं दिखाना है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब वो ऐसे हाँ चल यार इसके बाद तो हमें ना डिज्नीलैंड जाना चाहिए क्योंकि बहुत गलत हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एंड इट्स वेरी मुलान रूजिश। इट हैज़ दैट विक्टोरियन फील टू इट, द फर्स्ट पार्ट। एंड दैट वुमन who's actually a very some actress there, no, some famous actress, पता नहीं, Georgian actress. तो या उसके बाद फिर एक and it seems you know chemistry देख के तो लग रहा है there was something you know going on. तो Zareen please throw some light on that. I think we're just good actors. Thank God you didn't say we're just good friends. No man, sometimes that can be the acting. So as actors, good acting, bad acting, I mean that. Good. सबको पता लग गया क्या टैग करना है, क्या दिखाना है। To kind of please के the audience के अगर आप recreate करते हो तो आपकी इज्जत का सवाल हो जाता है in that sense. But thankfully it came out naturally because well बचपन से ये गाना सुनते आ रहे हैं and I took a week or something to digest the fact that I had to you know recreated such a big track. But by the end of it, when Arman, Neeti were supposed to be featured, I was like, oh, I'm kind of saved. Right. Yeah, but it was a fun experience. ये गाना obviously it was released in an era where I was not born or people my age were not there and they've not listened to these songs. And कभी-कभी क्या हो जाता है, you know, that golden songs get lost out for our generation here, and for them to reconnect, they if they listen to that old song, they don't connect with the sound and the you know the production जैसा उस time पे था. लेकिन if you give them in such a fresh format and yet maintaining the melody and you know the purity that the song had back then, I think that's amazing what Abhijit has done, what Manoj sir has done for this song. And मुझे लगता है कि मेरे age के जो भी you know बच्चे हैं जो who listen to this song, they will connect with this song even though it's an old song coming in a new format. They will listen to this song. Okay, this is one of my favorites. एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। वाव 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 वाव। बननी तो चाहिए सब, मतलब ऐसा हम नहीं बोल सकते कि नहीं बननी चाहिए, मतलब बट अच्छा लगेगा आर डी बर्मन साहब के ऊपर एक जर्नी उनकी जो भी रही है यू नो ऑफ हिज सॉन्ग्स, ऑफ हिज लाइफ एंड जो स्ट्रगल्स है, जो उनकी जो सक्सेस की जो फेजेस है, इफ दे कम आउट ऑन सिनेमा आई थिंक इट विल बी ग्रेट। देखो ना सारे सीन्स में कुछ ना कुछ फाइट थी और I mean okay honestly we are kissing on screen. Well, I think the whole experience was memorable. First of all, you know, जब हम ऐसे वीडियो देखते हैं तो when you look at it एक ऑडियंस की तरह जब आप लोग इसको देखते हो तो अलग लगता है, but when you're shooting it, it's not that much fun because there are like so many people looking at you. You have to be like, you know, there's a lot going on. तो ये जिस तरीके से आप अपने माइंड में सोचो ये वैसे नहीं होता ऑन सेट. And I think the most memorable experience would be the first time when we kissed in this video. He was the one peeling shine on me. Yeah, so I think that was. Well, it'll sound very cliched, but when I was a kid, I always wanted to be a singer and never an actor. So hopefully in the near future, when these people train me, I'll sing. You see the look Neeti gave you right now? You better not be stepping in that, girl. In my zone. Nah, I'm just kidding. Subscribe
now to youtube.com/biscuittv.